Hello, class 6. Welcome to the science class. My name is Ms. Dua, and the topic that I'm going to teach you today is cells. No, these are not the cells that are in your remote. We'll learn about them much more as we progress in this PPT. The topics that we're going to cover in this chapter are the cell. We're going to describe the basic structure of it, contents in a cell, define the contents that are present in a cell, parts of a cell, what are the different parts of a cell, and what is the difference between an animal and a plant cell. So, what is a cell? Like I said in the beginning, it's not the cell that's present in your remote control. This is a cell that is present inside your body, and you have multiple of them. So cells are the basic building block of all living things. Cells are the basic building blocks. आपने Legos देखे? Legos कैसे blocks की तरह होते हैं, हम एक करके जोड़ते हैं और फिर एक बड़ी सी एक figure बन जाता है. वैसे ही cells हैं. Our body is made up of different types of cells. Generally, there are two types of cells, animal and plant. Okay? The basic structure of a cell includes cytoplasm, nucleus, membrane, cell membrane, and mitochondria. You can see in this picture that I've shown that this is the cytoplasm. Okay, the cell is filled with cytoplasm, the nucleus. Okay, this is the nucleus. Cell membrane, it is the outside layer, the border of the cell. And mitochondria, these little needles, beads type thing that you see in the cell, these are the mitochondria. Now, see, this is just the basic structure of a cell. What is a cell? The cell is the building block, basic building block of our body. There are two types of cells, and both of these cells contain these four things: cytoplasm, nucleus, cell membrane, and mitochondria. So, contents in a cell. इनके अलावा बेसिक चीजों के अलावा सेल में क्या क्या चीजें होती हैं? So this chart that you see in front of me, the contents inside a cell, plant cell and animal cell vary. Different होते हैं. Plant cell में different चीजें होती हैं और animal cell में different चीजें होती हैं. They can be seen in the diagram given below. और इस diagram में आपको नजर आ रहा होगा कि plant cell में कुछ चीजें different होती हैं. Plant cell में Golgi bodies होती हैं, ribosomes होते हैं, लेकिन सिमिलर क्या है? न्यूक्लियस, दोनों में न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म दोनों में है, हमें सेल मेम्ब्रेन दिख रही है दोनों में. जो विजिबली फर्स्ट डिफरेंस हमें दिखता है वो शेप का दिखता है. प्लांट सेल इज अ लिटिल बिट रेक्टेंगुलर स्क्वायरिश टाइप का शेप है, और एनिमल सेल जो है वो राउंड होता है, थोड़ा सर्कुलर सा होता है, ओवल टाइप शेप होता है. Now parts of a cell, cell के parts की बात कर रहे हैं. Look at the animal cell and plant cell carefully and list down the many different parts you see on the sheet of paper that I've given you. So इस cell को, इस chart को आपने गौर से देखना है, और आप जो जो दोनों में different है, दो columns बना लें. Plant cell और animal cell में जो different हैं, same नहीं, सेम मैंने आपको बता दिया क्या है, लेकिन जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको आप लिस्ट कर लें एंड देन कंपेयर करें दोनों को. ठीक है, कि किसमें कितना ज्यादा है, किसमें कंपैरेटिवली कम पार्ट्स हैं. ठीक है. After you're done with that, now we're going to discuss the differences between animal cell and plant cell. So differences between animal and plant cell. Animal cells are smaller in size. Animal cells जो होते हैं उनके size smaller होता है, and plant cell जो होते हैं वो larger होते हैं. We as humans have animal cells inside our body, and plants like trees and flowers and bushes and these other different plants, you see they have plant cell obviously inside of them. Plant cells larger होते हैं, बड़े होते हैं size में, animal cells छोटे होते हैं. ठीक है. No cell wall. Animal cell has no cell wall. Cell wall नहीं होती है, लेकिन plant cell में होती है. एक extra layer होती है cell membrane के बाद.
न्यूक्लियस इज इन द सेंटर ऑफ द एनिमल सेल, एनिमल सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, while the nucleus on inside the plant cell is not in the center, it's towards the side. ठीक है, many vacuoles, plant cell animal cell have many vacuoles, but plant cell only has one vacuole. Plant cell cannot synthesize nutrients, synthesize मतलब make नहीं कर सकता nutrients, plant cell, animal cell sorry, लेकिन प्लांट सेल ये चीज कर सकता है, प्लांट सेल अपने प्लांट के लिए, अपनी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स बना सकता है, सिंथेसाइज कर सकता है. नो प्लाज्मोडेस्माटा, एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता, लेकिन प्लांट सेल में होता है. ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस हैं, यू नीड टू कीप इन माइंड. If somebody asks you what are the differences between animal and plant cell, you need to know these basic differences. And सबसे मेन डिफरेंस जो है वो शेप का हमें दिखता है, जो हमने चार्ट में देखा. Okay, the similarities and differences between animal cell and plant cell. Similarities क्या, again हमने जो लिखी थी similarities हमने आपको बताई थी मैंने, कि साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है. बट डिफरेंस जो है वो ये हम ग्रीन से लिखे हैं यहाँ पे, कि सेल्यूलोज सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है. परमानेंट वैक्यूल एक इतना बड़ा सा प्लांट सेल में होता है. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एक और चीज है जो कि प्लांट सेल में होती है और एनिमल सेल में नहीं होती है. ठीक है, now let's recall the parts of cell and their functions. Parts of cell कौन से हमने पढ़े थे? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों सेल्स में होता है. ठीक है, एनिमल सेल में जो है वैक्यूल्स डिफरेंट मोर देन वन होते हैं, और प्लांट सेल में एक ही होता है. ठीक है, हम एनिमल सेल अपने लिए न्यूट्रिएंट्स खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता, लेकिन प्लांट सेल कर सकता है. These are two of the main differences, and obviously the size also, because the size also is different. All right, so this is a worksheet that I've given you. I want you to write down your name, date, today's date, because we're doing the worksheet today, your class and subject, science. I want you to match you see the pictures. I want you to match the correct parts to the correct picture in the cell. Okay? प्लांट सेल की भी पिक्चर है और एनिमल सेल की भी है. ठीक है, दोनों को आप सॉल्व कर लें, ये मैच करके करेक्ट पिक्चर पे करेक्ट नेम के साथ मैच करना है. ठीक है, एंड submit this worksheet to me at the end of the class, and I will grade you according to your results. Okay, so this was the end of our presentation. I will see you all in the next class. Goodbye.